Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to read the English book of class 6th, and here we are reading one of the topic here, that is the Kashmiri shawl. In the previous lectures we read few about the Kashmiri shawl, and now today we will go ahead through more lines. Now first of all I will read and you will listen carefully. Now let us begin. Local shopkeepers or vendors sell the wool taken from the goats to women who sort the fleece before spinning it on a spinning wheel. The superior quality thread is served for the wrap and the coarser thread for the weft. The finer and softer the threads are, the better money you can get. Kashmiri weavers always use horizontal looms. Two or three sit together at the same loom. The women prepare the wraps by doubling the thread. The designer called Naqash decides the pattern. The color caller or Tara Guru reads the design from the bottom upwards and calls out each color in turn together with the number of wrap threads under which the bobbin of the weft has to pass. The pattern master, called the Talim Guru, writes these instructions down using the traditional signs or shawl alphabet. The weavers keep this scription, called the Talim, in front of them as they work at the loom. Now these are the few lines that we will try to understand about the Kashmiri shawl. In the previous lectures you know that the Kashmiri shawl is one of the famous masterpiece of handicrafts of Kashmir. It becomes famous throughout the world, particularly in Europe, when the Francis Bernier talked about the shawl and how it is being made. You know that the wool from the local goats are collected, and there is also the wild goats wool. So in this case there are two types of wool, one from the local goats and another from the wild goat, that is also called the Kel goats. These are the two types of wool that we collected from the goats, and the one that is the wild goat's wool or the Kel goat's wool is more expensive than the local fabric. How these shawls are to be made? Local shopkeepers or vendors, as you know, sell the wool taken from the goats to women who sort the fleece before spinning it on a spinning wheel. In ancient times, you already know that in our homes, women sort these fleece before the spinning wheel. You know the wheels, the spinning wheels in our homes in ancient times, their models are also present in our homes. On these spinning wheels, the women first of all sort the fleece and then
spinning it. The superior quality thread is reserved for the wrap. For weaving, there we need two types of threads. One is wrap and warp and wrapped. Warp and weft. The superior quality is reserved for the waft and the remaining is reserved for the weft. The finer, softer the threads are, the better money you can get. Kashmiri weavers always use horizontal looms. 2 or 3 sit together at the same loom. 2 or 3 men or women sit on the looms and weave the shawl. The women prepare the wraps by doubling the thread. The designer, which we call the naqash, decided the pattern. The color caller, that we call the Tara Guru, reads the design from the bottom upwards and calls out each color in turn together with the number of warp threads under which the ribbon of the weft has to pass. So the pattern master, which we also call the Talim Guru, writes the instruction down using the traditional signs or shawl alphabet. The weavers keep this transcription called the Talim in front of them as they work at the loom. तो अगर हम अपनी भाषा में देखेंगे तो जो ये शॉल है किस तरह से हम बनाते हैं, ये हम लॉम्स पर बनाते हैं. 3 से 4 या 5 मेन या वुमेन एक लॉम पर बैठते हैं और इस शॉल को बनाते हैं. पहले ये 2 तरह के थ्रेड्स जो है वो तैयार करते हैं, एक वाफ्ट और दूसरा वेफ्ट. रैप एंड वेफ्ट, वॉप एंड वेफ्ट, 2 तरह के थ्रेड्स तैयार किए जाते हैं और जैसा थ्रेड होगा वैसा ही शॉल बनेगा, वैसे ही उसके पैसे भी, उसकी कीमत भी मुकर्रर होगी. तो जितना अच्छा थ्रेड होगा उतना अच्छा कीमत भी मिलेगी. तो वॉप बनाने के लिए ये थ्रेड जो है वो डबल किया जाता है और फिर डिज़ाइनर इस शॉल का होता है जिसको हम नक्काश भी कहते हैं. इसके अलावा और एक आदमी यहाँ पर होता है जो कलर इसमें डालता है, कलर देने के लिए उसको हम तारा गुरु कहते हैं. वो डिज़ाइन रीड करता है फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड्स और इस तालीम को वो जारी रखता है इन आदमी के साथ जो इसके साथ काम करते होंगे. तो इसी तालीम के ज़रिए वो इन बॉबन जो है वो वेफ्ट के लिए वो पास करते हैं. इस तरह से पैटर्न मास्टर उसको हम तालीम गुरु भी कहते हैं, वो ये इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं और फिर यही साइन जिनको हम शॉल अल्फ़ाबेट भी कहते हैं इस्तेमाल होते हैं यहाँ इस शॉल बनाने के लिए. तो जो ये वीवर्स होते हैं, शॉल बनाने के काम जो करते हैं, वो इस तालीम को पढ़ते हैं और इस साइन को देखते हैं, इसको शॉल अल्फ़ाबेट भी कहते हैं. और इनको पता होता है कि किस जो ये तालीम दी जाती है इसके मुताबिक वो इसमें कलर्स और रंग भी चढ़ाते हैं इस शॉल में. इस तरह से एक पैटर्न बनता है और शॉल का पैटर्न बनाने के लिए पैटर्न मास्टर होता है जिसको हम नक्काश कहते हैं. तो उसके हिसाब से फिर ये शॉल जो है वो तैयार होता है. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी होंगे
جو آپ کے ڈفیکلٹ لگتے ہوں گے. شاپ کیپرس جو آپ کو پتہ ہے دکانداروں کو کہتے ہیں. وینڈرز جو ہیں چھاپڑی والے یعنی چھاپڑی پر جو اپنا سامان بھیجتے ہیں. فلیس اون کو کہتے ہیں. سپننگ اون کو وہ تھریڈ بنانے کے لیے سپن کیا جاتا ہے. اسی طرح سے واپ اینڈ ویفٹ دو طرح کے جو یہ تھریڈ بنائے جاتے ہیں. لوم جو کشمیری میں یہ بناتے ہیں لکڑی کا کارخانہ اس پر شال بنایا جاتا ہے. تو یہ کچھ الفاظ تھے. اس شال کی جو لینگویج ہے وہ الگ ہے، الگ لینگویج اس کی ہے جس کو ہم شال الفابیٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ چیزیں یاد رکھنے ہیں. آج ہم اتنا ہی کریں گے، اگلے لیکچر میں اور ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.